Good morning, children. Now today we'll begin with the new heading, that is properties of soil. Soil has some special properties which determines the different soil type. The first property of soil is soil contains water or moisture. आप एक मुट्ठी मिट्टी ले करके जो कि आपको ड्राई दिखने में लग रही हो और उसे कंटेनर में डाल के ऊपर से एक लिड लगा दीजिए और नीचे से उसे हीट करिए, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स लिड के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे. दिस शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर or moisture in it. So when you pass through a farmland during a hot summer day, you notice that the air above the farmland is shimmering, shining with a slightly slate light. This happens because the soil in the farmland contains water or moisture. On a hot summer day, the water evaporates to form water vapor, and the water vapor coming out from the soil reflect the sunlight, due to which the air above soil seems to shimmer. है ना, इसका मतलब समझ में आया. सॉइल कंटेन्स वाटर. कभी फार्म लैंड में अगर आप जाएंगे खाली फार्म लैंड है हॉट सनी डे में, तो आपको लगेगा कि कुछ दूर पे पानी है और जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, है ना. इस तरह की फीलिंग आती है दूर से ही. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉइल हॉट हो रहा है और हॉट होने की वजह से एवापोरेशन, उसमें जो मॉइस्चर है वो उसमें से बाहर निकलते रहता है और उस पर जब लाइट पड़ती है तो हमारी आइज़ को ऐसा फील आता है कि वहाँ पर पानी है, बट एक्चुअली वहाँ पानी होता नहीं है. नाउ सेकेंड, सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट. Soil has spaces between its particles. When soil is poured over the soil, then some of it gets absorbed in the soil and the rest passes down the soil. जैसे आप लोग जब गमले में पानी डालते होगे तो देखते होगे कि कुछ पानी को सॉइल एब्जॉर्व कर लेता है और जो एक्सेस वाटर होता है वो पानी में से बह जाता है. अब वो जो एब्जॉर्व किया हुआ पानी है वो कितनी देर तक वो एब्जॉर्व किए रह सकता है, दैट इज़ कॉल्ड percolation of water. The percolation rate of water in soil is the volume of water in millimeters which passes down the soil per minute. तो percolation क्या है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉइल कितने वाटर को होल्ड कर सकता है, दैट इज़ percolation ऑफ वाटर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. Like example, here it is given, 100 ml of water takes 10 minutes to percolate completely in a particular soil. यानी 100 ml वाटर 10 मिनट्स लेता है सॉइल में पूरी तरह से परकोलेट या सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब होने का टाइम 10 मिनट्स है. So 100 ml of water is absorbed by the soil in 10 minutes. So calculate the percolation rate of water in soil. So here the volume of water percolated is 100 ml. Time taken for percolation is 10 minutes. So percolation rate of water in soil is equal to volume of water percolated in soil in ml and time taken for its percolation in minutes. That is 100 ml upon 10 minutes. So it is equal to 10 ml per minute. So percolation rate of the soil is 10 ml per minute. Now soil absorbs water. Next is soil can absorb water. We know that the soil is porous and has spaces in between. सॉइल पोरस है और उनके बीच में एयर स्पेसेस है, एंड ड्यू टू दिस सॉइल कैन एब्जॉर्ब और रिटेन वाटर. ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स हाउएवर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट. सारे जितने भी तरह के सॉइल हैं सबका
सेम अमाउंट और सेम टाइम ड्यूरेशन तक वाटर को अपने पास परकोलेट कर सके या रख सके, वो सेम नहीं होता. लाइक इन सैंड इफ़ यू पुट वाटर, नो देयर विल बी नो वाटर परकोलेशन. वो क्या होगा, वहाँ पे पानी ऊपर से डालोगे और पूरा का पूरा नीचे बह जाएगा. द सॉयल विल नॉट एब्जॉर्ब, द सैंड विल नॉट एब्जॉर्ब वाटर. whereas loamy soil, it will absorb water very fast as compared to clay soil, because clay soil is very fine, it is very fine particles, and the water poured on it forms a layer above the clay soil, and it takes longer time for percolation. To find out which soil absorbs more water and which soil absorbs less water, we need to find the percentage of water absorbed by the soil. So, one activity is given here to find the percentage of water absorbed by different types of soil. Take 3 graduated cylinders and put a glass funnel over each of them. Take filter paper, fold them properly and put them in each of the glass funnel. Now take equal quantity of 3 types of soil, that is sandy, clayey and loamy. Use a physical balance to weigh the dry powder of soil, means all the quantity of the soil in all the 3 should be same or equal. Now put this weighed soil in 3 different funnels. Pour equal amount of water, that is 50 ml, in each funnel with the help of measuring cylinder. Now pour water drop by drop on each type. यानी जो आपने सॉइल लिया है वो भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल क्वांटिटी, और जितना वाटर आप उसमें ऐड कर रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी ऑफ इक्वल क्वांटिटी. और इन तीनों फनल्स के ऊपर, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल रखे, एक में सैंड, एक में क्ले, एक में लोमी सॉइल, तीनों में उतना ही सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आप डाल देंगे. एंड यू विल फाइंड दैट सैंड में जितना आपने वाटर डाला सारा का सारा नीचे कलेक्ट हो गया, जबकि क्लेई सॉइल में आप पानी डाले हो तो वो बहुत कम अमाउंट में नीचे कलेक्ट हुआ. एंड लोमी सॉइल में water is little more than water collected in clay soil and less than water collected in sandy soil. So in this way you can conclude that the percentage of water absorbed by each type of soil can be calculated. That weight of soil 50 grams you have taken, volume of water poured in each funnel is 50 ml. So volume absorbed by the soil is 50 minus x is the remaining water that is collected in the funnel, in the test tube. So that you will reduce, that you will minus, and you will get the amount of water percolated by each type of soil. Second example is also given here. 50 ml of water was added drop-wise to 50 gram of dry soil kept in filter paper in a funnel. The amount of water collected in the graduated cylinder below was found to be 40 ml. Now calculate the percentage of water absorbed by the soil. So for this you can see the weight of soil taken 50 grams. Volume of water poured is 50 ml. Volume of water collected in the cylinder is 40 ml. So volume of water absorbed by the soil is 10 ml. So weight of water absorbed by soil is 10 gram. Percentage of water absorbed by soil is weight of water absorbed by soil, that is 10 gram upon weight of soil. So it is 20%. So the percentage of water absorbed by the soil is 20%. 20% water has been absorbed by the given sample of soil.
Now we come to soil and crops. Different types of soil are found in different places. The main factors that affect soil profile and bring about change in soil structure and characteristics of parent rock, type of vegetations and climate. वो उनका parent rock कहाँ क्या है, कैसा है और वहाँ की वेजिटेशन और क्लाइमेट कैसी है, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का सॉइल किस तरह का होगा. Like wind, rainfall, temperature, light and humidity are some of important climatic factors. The type of soil as well as the climatic factors determine the various types of vegetations and crops that might grow in any region. Clay soil having a good capacity to retain water and it is required for growing paddy, whereas loamy soil which drain water easily are required for growing lentils, that is masoor and other pulses. Sandy, loamy or loamy soil which drains water easily and can hold plenty of air, it is required for growing cotton. And clay soil and loamy soil, mixture of clay and loamy soil are suitable for growing cereals like wheat and gram, and such soil have good water retaining capacity. So in this way children, your chapter is complete and we will do its exercise. Once we will summarize this chapter and after that we will do its exercise.